Hello everyone, welcome to my channel Maths with Sneha. So in this video we are going to study double integration without limit. So whenever we want to solve any example of double integration when the limits of integrations are not given, so our first important task is what? We have to calculate the limits, and that limits we can calculate using the concept of strips. So the first and very important thing that we are going to study in this video is what? Concept of strip. So let us quickly revise the structure of double integration. So now here we can see that double integration looks like this, where we have the double integration of a function which contain a variable x and y. So this integration is called as a inner integration. This integration is called as outer integration. Now the order of integration can be anything, either dx into dy or dy into dx. And in previous videos we have seen that we can get the order of the integration, or we can calculate the order of the integration using or by observing the limits of both the integrations. So if the limits of both the integrations are given, then we can decide the order and then we can do the integration. So the very important thing is what? When limits of integrations are not given, so our first important task is to calculate the limits of integration, and that limits we are going to calculate using concept of strips. So here we have only two types of strips. So I will write down here strips. We have only two types of strips. The one is what? Vertical strip. Vertical strip. Vertical strip means what? It is parallel to y-axis. Parallel to y-axis. And the another strip is what? The horizontal strip. Horizontal strip. This strip is what? Parallel to x-axis. So whenever we are seeing the concept of the strip, मतलब जब भी हम इस strip का concept अभी पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है कि दो तीन चीजें हमें ध्यान से सुननी है. वो क्या कि कौन सा भी strip लेने से order of integration क्या बनेगी, और strip लेने के बाद दोनों भी end जो रहेंगे strip के कि उससे हमें किसका value calculate करना है. So when you take a vertical strip, then order of integration, next is what? Order is dy into dx. What? Order is what? Dy into dx. Because since the strip is parallel to y-axis, so first we will integrate with respect to y and then we'll integrate with respect to x. Since we are integrating first with respect to y, so from both end of the strip we will calculate the value of y. See, this vertical strip will look like this. Vertical strip will look like this. This is what the vertical strip. And from both end, this is what our lower end, this is what the upper end. So from lower end we will calculate value of y in terms of x, and from upper end also we will calculate the value of y in terms of the x. Okay, and these values we will calculate by observing कि ये strip का दोनों भी end किस कर्व को टच कर रहा है. तो स्ट्रिप का दोनों भी एंड जिस भी कर्व को टच करेगा वहीं से हम क्या फाइंड करेंगे? y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कैलकुलेट करेंगे. नाउ द सेम थिंग वी विल डू फॉर द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. सो बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. सो ऑर्डर is dx into dy, because it is what? Horizontal strip means it is parallel to x-axis. So first we will integrate with respect to x and then we will integrate with respect to y. Since we are going to integrate with respect to x, so from both end of the horizontal strip we will calculate value of x in terms of the y. So the horizontal strip will look like this. Horizontal strip means it is parallel to x-axis, so the strip will look like this. And from both ends, so this is what our right end. From right end we will calculate value of x in terms of the y, and from left end also we will calculate the value of x in terms of the y. So this is what the concept of strip. So concept of strip में हमें important चीज क्या समझनी है कि कौन सी स्ट्रिप लेने से ऑर्डर क्या बनेगी. ऑर्डर अगर एक बार आपको पता चला तो फिर जो भी स्ट्रिप है, स्ट्रिप के दोनों भी जो एंड है उससे हमें किसका वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो लेट अस रिकॉल अगेन. सो वी हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिप, दैट इज अ वर्टिकल स्ट्रिप एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. Vertical strip means what? It is parallel to y-axis, and by taking vertical strip the order of integration बनेगी dy into dx. By taking horizontal strip order of the integration बनेगी dx into dy.
by taking a vertical strip from both end of the strip we have to calculate only value of y in terms of the x. ये value of y constant भी हो सकता है या फिर in terms of x भी हो सकता है, but y का value in terms of y मतलब it is useless, उसका कुछ chance ही नहीं, right? अभी अगर आपने horizontal strip अगर लिया then from both ends we have to calculate value of x in terms of the y. This is what the concept of strip. Now let us quickly see some examples. So generally the example of double integration without limit looks like this. So where the example is like evaluate the double integration. Now here you can see that the limits of double integrations are not given. So here we have to evaluate the double integration of function y over the region bounded by the curves, and here we have the three curves. So now whenever we want to solve any example of double integration without limit, तो अगर वहाँ पे लिमिट नहीं दिया तो फिर वहाँ पे कर्व्स का इक्वेशन दिया जाएगा, तो वो कर्व्स हमें ड्रॉ करके जो भी बाउंडेड रीजन आएगा फ्रॉम दैट बाउंडेड रीजन एंड ओवर दैट रीजन वी हैव टू टेक द स्ट्रिप्स जो कि हमने अभी अभी पढ़ा. एक तो हम वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले सकते हैं. सो ओवर दैट रीजन वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रिप एंड फ्रॉम दैट स्ट्रिप वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन. नाउ लेट अस सॉल्व दिस एग्जांपल्स क्विकली. सो नाउ हियर वी हैव द थ्री इक्वेशन ऑफ द कर्व्स. सो फर्स्ट वन इज व्हाट y इज इक्वल टू 0. अभी यहाँ पे y इक्वल टू 0 पॉइंट नहीं, बिकॉज यहाँ पे क्या बोले कि कर्व बोला है, तो y इक्वल टू 0 एक कर्व रिप्रेजेंट करेगा, नॉट अ पॉइंट. एंड अगेन x इक्वल टू 2 ऑल्सो यहाँ पे पॉइंट नहीं रिप्रेजेंट करेगा, वो कर्व रिप्रेजेंट करेगा. सो यू नो everyone know that y equal to 0 means it is a x-axis. Y equal to x is a straight line passing through first and third quadrant, right? Now x equal to 2 is what? It is again a straight line parallel to x-axis and passing through 2, 0. Okay, I will write down these things here. So y equal to 0 is what? It is a x-axis. Then y equal to x is what? Straight line, and x equal to 2, it is again a line passing through point 2, 0, passing through point 2, 0, and the this line will be and parallel to y-axis. So whenever you want to draw a region from the curves, आपको सबसे पहले कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है वो पता होना चाहिए, राइट? तो so now let us quickly draw this region. So now this is what the y-axis, this is the x-axis, this is x-axis, this is y-axis, this is the origin. Now since the first is what y equal to 0 means what? It is a x-axis. So x-axis means आपका इक्वेशन आएगा कर्व का y equal to 0. Now next is what? Y equal to x. So y equal to x, it is a straight line. Everyone know how to draw this. So y equal to x will be, so y equal to x is this line. Y equal to x is what? This line. This is what? Y equal to x. This is a straight line passing through first quadrant and the third quadrant. And next line is what? Or next curve is what? X is equal to 2. Now we know that x is equal to 2 is what? A line passing through point 2, 0, and this line will be parallel to y-axis. So now first we will place this point 2, 0 which is on the x-axis. This 2, 0 point will be like here, x-axis, on x-axis 2, 0 point, and then x equal to 2 represent a line passing through this 2 point, and that line will be parallel to y-axis. So let us draw this line. This line will be like this. Okay, and the equation of this line is what? X is equal to 2. Now here the region is what? The region is given as region bounded by these three curves. So now here our region of the integration will be bounded by all these three curves. So bounded by all these three curves means what? कि हमारा region ऐसा होगा कि जिसकी boundary, उस region की boundary ये तीनों curves होंगे. So now here we can easily observe that our region of the integration will be a triangle formed by these three curves. So I will shade this region. So region will be like this. This is what our region of integration, and over this region of integration we have to calculate or we have to evaluate the given double integration. Okay, now over this region, to calculate or to evaluate this double integration, the first important task is what? We have to calculate the limits of given integration.
And now to calculate that, here we will use the concept of strip. So over this region, either you can take a vertical strip, means the strip parallel to y-axis, or you can take a horizontal strip, means the strip parallel to x-axis. अभी आपके पास दो choices है, either you can go for the vertical strip or you can go for the horizontal strip. But I will suggest that first go for the vertical strip, because most of the examples are easily solvable using the vertical strip. Okay, so let us see, or let us take the vertical strip over the region. So I will change the marker. So I am taking a vertical strip over the region. अभी जो भी हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं ना, वो सिर्फ एक ही जगह पे खड़ी नहीं रहेगी. ये जो भी वर्टिकल स्ट्रिप है, वो वर्टिकल स्ट्रिप हमारी ओवर होल रीजन मूव होंगी. अब ये वर्टिकल स्ट्रिप ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसका पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे. अगर हम इसका पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं और अगर इसको ओवर होल द रीजन अगर इसको मूव कर रहे हैं, अभी देखो हमारा रीजन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, फ्रॉम दिस पॉइंट O 0,0, दिस पॉइंट इज व्हाट 2,0 एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस. अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, से यहाँ पे ऑलरेडी आपका x का वैल्यू कितना है 2 है, एंड इट इज अ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन. अगर x का वैल्यू अगर 2 है तो फिर y का भी वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 2, बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन y इक्वल टू x. तो फिर हमारा जो भी ये रीजन है वो रीजन बाउंड हो रहा है ये 3 पॉइंट में से, राइट. तो अभी जब भी हम इस स्ट्रिप को यहाँ पे मूव करेंगे तो स्ट्रिप आपका मूव होगा फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राइट एंड ओवर होल द रीजन. मतलब आपका स्ट्रिप सिर्फ एक ही जगह पे खड़ा नहीं रहेगा, वो यहाँ से यहाँ तक पूरा ऐसे मूव होगा. अभी आपको दो चीजें ऑब्जर्व करनी है यहाँ पे. क्या, जब भी आपका स्ट्रिप ओवर दिस रीजन जब भी आप मूव करोगे फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, तो आपको क्या चीज ऑब्जर्व करनी है कि इसका लोअर एंड कौन से कर्व को टच हो रहा है और इसका अपर एंड कौन से कर्व को टच हो रहा है. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक स्ट्रिप ड्रॉ करती हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा. अभी हमने पढ़ा है क्या कि बाय टेकिंग अ वर्टिकल स्ट्रिप लेने से ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेगी, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन बनेगी dy इंटू dx. बिकॉज अगर सिंपल ध्यान में रखो, अगर स्ट्रिप आपका पैरेलल टू y है तो पहले आप विद रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट करोगे. अगर आपका स्ट्रिप पैरेलल टू x है तो फिर वहां पे आप विद रिस्पेक्ट टू x से पहले इंटीग्रेट करोगे. अभी हमने लिया पैरेलल टू y स्ट्रिप, तो फिर सबसे पहले हम विद रिस्पेक्ट टू y ही इंटीग्रेट करेंगे. सो इसलिए ऑर्डर बना आपका dy इंटू dx. अभी आपको ऑब्जर्व क्या करना है कि इसका लोअर एंड थ्रू आउट द रीजन कहाँ पे टच कर रहा है, तो इस स्ट्रिप का लोअर एंड टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे. एंड सिंस वी नो दैट व्हेन यू टेक अ वर्टिकल स्ट्रिप फ्रॉम बोथ एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y. व्हाई, बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट. तभी इसका लोअर एंड टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे. एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो फिर इसका लोअर एंड पे y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई. अभी देखो अपर एंड कहाँ पे टच कर रहा है, अपर एंड टच कर रहा है ये लाइन को. ठीक है, अपर एंड टच कर रहा है ये लाइन को. इस लाइन पे y की वैल्यू कितनी है, x है, तो फिर अपर एंड से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, x आ गई, राइट. अभी इसमें से लोअर लिमिट कौन सा और अपर लिमिट कौन सा y का, तो लोअर एंड से जो भी y की वैल्यू आएगी दैट इज योर लोअर लिमिट. अपर एंड से जो भी वैल्यू आएगी y की दैट इज योर अपर लिमिट. तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम 0 टू x. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिर क्या मिला, लिमिट्स ऑफ y आर फ्रॉम 0 टू x. चलो y की तो लिमिट मिली, अभी हमें हमारा क्या बचा है कि लिमिट्स ऑफ x. तो अभी लिमिट्स ऑफ x अगर हमें फाइंड करने तो वी विल सी हॉरिजॉन्टली भी देखो कि जो भी हमारे पॉइंट्स है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस बोलो या फिर जो भी पॉइंट्स है ट्रायंगल के, वहां पे देखो कि x का लोवेस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है. तो ओवर दिस रीजन x का लोवेस्ट वैल्यू कितना है, 0, और हाईएस्ट वैल्यू कितना है x का, 2 है. तो फिर यहाँ पे लिमिट्स ऑफ x क्या रहेंगे, limits of x will be from 0 to 2. Now let us assemble the double integration. Now I will do that part here. Since हमारा भी इंटीग्रेशन क्या है कि वी हैव टू इवेल्युएट व्हाट, i इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ y. अभी देखो ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे dx इंटू dy. बट अभी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने जो स्ट्रिप ली है उसके हिसाब से हम ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लिखेंगे. यहाँ पे अभी हमने स्ट्रिप ली थी पैरेलल टू y, तो ऑर्डर क्या बनेगी फिर इसकी, dy इंटू dx. तो यहाँ पे आएगी फिर आपको ऑर्डर dy इंटू dx. सिंस अभी अंदर फर्स्ट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y, तो जो भी आपका इनर इंटीग्रेशन है, इनर इंटीग्रेशन की लिमिट आपके रहेंगी लिमिट ऑफ y, एंड लिमिट ऑफ y क्या आ रहा है फ्रॉम 0 टू x. तो फिर इनर इंटीग्रेशन की लिमिट आप क्या आएंगे फ्रॉम 0 टू x. एंड सिंस
आफ्टर दैट वी आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर आउटर इंटीग्रेशन की लिमिट आएंगे आपकी लिमिट ऑफ एक्स दैट इज फ्रॉम 0 to 2. दिस वे हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड दिस वे हाउ वी हैव टू असेंबल देम इनटू द डबल इंटीग्रेशन. ओके, नाउ इसके आगे अभी सेम ही करना है प्रोसीजर, सेम ही प्रोसीजर है कि जैसा हमने डबल इंटीग्रेशन विथ लिमिट्स कैलकुलेट करा था, राइट. सो नाउ यहाँ पे अभी क्या है कि हमें इंटीग्रेट करना है y को विथ रिस्पेक्ट टू क्या y, तो y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y क्या बनेगा y square by 2 and the limit will be from where to where 0 to x. The outer integration will be as it is from 0 to 2 dx. Now replace y by upper limit and lower limit. जब भी आप y को upper and lower से replace करोगे तो फिर यहाँ पे क्या मिलेगा x square by 2. When you replace y by 0 it will be 0. And now integrate this with respect to x. अभी x square का integration with respect to x क्या आएगा? See, while doing the integration we have seen that we just have to increase power by 1. तो यहाँ पे power है 2, तो power में और एक आप add करोगे तो फिर कितना मिलेगा x raised to 3 divided by 3. Already here we have a 2, so 3 into 2 will be 6 and the limit will be from 0 to 2. Now put the limits. x को जब आप 2 से replace करोगे तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 2 का cube, that is 8 by 6 which is nothing but 4 by 3 by cancelling the common factor. So this way how we have to solve the double integration. So ये मतलब एक बार अगर आपको लिमिट अगर मिला तो उसके आगे वाला पार्ट इजी है, बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि वंस वी हैव द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन देन हाउ टू कैलकुलेट द डबल इंटीग्रेशन. दिस मेन important part in this video is what to calculate the limits of integration and that we have seen here in this example. Okay, so we will end our video here. If you find this video helpful to you, then please like it, subscribe my channel and share the same video with your friends. Thank you.